हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ पार्ट नंबर 3 ऑफ इडियोमेटिक्स एक्सप्रेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 23 एंड इसे हम इडियम्स भी कह देते हैं। एंड ये मैं करा रहा हूँ फ्रॉम दिस बुक एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन फॉर क्लास 8 एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय सुल्तान चंद, विच मीन्स SCS। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो अब फर्स्ट है अबव बोर्ड। सो इसका मीनिंग है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एंड इसका सेंटेंस है ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ दिस फर्म आर अबव बोर्ड। नेक्स्ट, कट एंड ड्राइड। सो इसका है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। देयर आर नो कट एंड ड्राइड रूल्स टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। सो इसका सेंटेंस हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। द पॉलिसी ऑफ अ सेल्फिश मैन हु रिफ्यूजेस टू ऑलो हिज नेबर वट ही हिमसेल्फ कैन नॉट यूज। और इसका सेंटेंस है बॉयज समटाइम्स फॉलो अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी when they neither use the playground themselves nor allow others to play in it. So the dogs of war, and इसका मीनिंग है famine, sword and fire, and इसका सेंटेंस है the dogs of war were let loose and they played havoc with the country's population. Next है an eyewash, a deception. The authorities had already made their choice. The interview was only an eyewash. A fair deal. So a bargain which is fair and just to both the parties. And its sentences, it would be a fair deal if I pay back your money with interest and my thanks. A fair weather friend. And इसका मीनिंग है a friend in prosperity alone only. एंड इसका सेंटेंस है इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंडलेस देन टू हैव ओनली फेयर वेदर फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट, अ फार क्राई, स्टिल फार अवे, एंड इट्स सेंटेंसेस द ड्रीम ऑफ टोटल लिटरेसी इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई. नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, एंड इसका मीनिंग है इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन. और इसका सेंटेंस है इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर रिटायरमेंट पीपल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. And next is from hand to mouth. So consuming every day whatever little is earned. And इसका sentence है most Indians are still living from hand to mouth. Next, give and take, obliging each other mutually. So इसका sentence है if you adopt the give and take policy you will have a smooth sailing in life. So good offices, and इसका जो हमारा मीनिंग है वो है रिकमेंडेशन, एंड इसका सेंटेंस है प्लीज़ यूज़ योर गुड ऑफिसेस टू गेट मी अ जॉब. नेक्स्ट, अ गुड समारिटन, और इसका जो मीनिंग है वो है अ काइंड एंड चैरिटेबल पर्सन, एंड इसका सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड अ गुड समारिटन एंड गेव मी मनी टू सेट अप अ स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट. सो अ गुड टर्न, and its meaning is an act of kindness, and its sentence is a good turn never goes unrewarded. The green-eyed monster, jealousy, and its sentence is beware of the green-eyed monster for it is sure to destroy your happiness in life. Hard up, short of money, and its sentence is being hard up myself I cannot send you any money. High time, ripe time. Examinations are fast approaching. It is high time you start studying seriously. Hue and cry. Its meaning is a great noise, and its sentence is they raised a hue and cry when they saw the thief escape. In a nutshell, briefly, please tell me about the president's speech in a nutshell. In the face of, against. Great men remain calm and composed even in the face of heavy odds. In high spirits, cheerful. And its sentences in spite of severe cold our jawans were always in high spirits. In the nick of time, and its meaning is at the exact time, and its sentences we arrived at the hall in the nick of time. The show was just about to begin. In vogue, and its meaning is in fashion, and sentences jeans made from faded denim are still in vogue.
off and on, now and again. And its sentences: I have to remind the servant off and on to give me sugarless tea. Out of order, and its meaning is not in working condition. Its sentences: my watch being out of order, I could not know the exact time. Over and above, in addition to. And its sentences: you will be given bonus over and above your salary. Over head and ears, fully. And its sentences: she is over head and ears in love. Point blank, directly, plainly. And its sentences: she told me point blank that she won't be able to help me. A red letter day, and its meaning is a memorable day. The sentence is 15th August 1947 is a red letter day in the history of India. Sum and substance. The meaning is gist, and the sentence is give me the sum and substance of the president's speech. Next, weal and woe, joy and sorrow. And its sentence is: I assure you that I will stand by you in weal and woe. With open arms, and its meaning is with a warm welcome. And its sentences: wherever he went, he was received with open arms. ओके सो फ्रेंड्स, आज ये वाले चैप्टर के जो ईडियम्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी एक्सरसाइजेस नहीं पूरे हुए हैं. और एक्सरसाइजेस मैंने और चैप्टर्स के भी किया मेरे चैनल के ऊपर, सो वो भी आप सभी जाकर देख सकते हैं. एंड मैं करता रहूँगा, एंड इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूँगा. ओके सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.